Displacement of human population due to natural disaster is a phenomenon not unknown to human civilization. While the affected people have to contend with multiple exigencies and insecurities arising as a result of such disasters, physical survival is possibly the first need that they have to be content with. In times such as these, role of the state in extending support to the affected population becomes most crucial. Shelter and food become an immediate necessity. How the state can move in with an entire gamut of interventions to provide succor and relief to the affected people was amply demonstrated in the recent floods caused by the breach in the embankment of the Kosi River. It was an August afternoon when tragedy struck the state of Bihar. As the mighty Kosi broke the eastern embankment at Kusaha in Nepal and poured itself into Bihar, nearly 50 kilometers away from the breach. For an outsider who has always heard tales of floods in Bihar, it appeared to be an usual occurrence in the monsoon. But unfortunately, it was the beginning of a larger tragedy in the making, an event unprecedented in the history of Bihar and arguably in the history of disasters of our country. The Kosi river system in the state of Bihar is one of the most complex river systems in the world. The river, which begins in the Himalayas at the height of 7,000 meters, gathers its might from the confluence of 7 different rivers and is called Saptakosi in Nepal. It takes its water from the highest peak in the world, the Mount Everest, and the huge range of Kanchenjunga mountains. Saptakosi is the confluence of river Indravati, Sunkosi, Tamvakosi, Lichukosi, Dudkosi, Arunkosi, and Tamarkosi. The first 5 rivers form the Sunkosi. The Sunkosi draws its water from the Makalu range and travels from west to the east. The 6th river, Arunkosi, comes from Mount Everest. The 7th river is Tamarkosi, which joins from the Kanchenjunga range, traveling from west to east. These 3 rivers meet at Triveni to form the Mahakosi, or simply the Kosi. In the geological context, the Himalayas are in their infancy of development, as a result of which a copious amount of fine sand and mud moves out during the monsoons. This is true for a mighty river like Kosi as well. When it hits the low areas of the Tarai in Nepal and Bihar region, the mud and sand deposited over the years causes the river to change its course periodically. This strait of the Kosi is unique in itself, making it one of the most prolific course-changing river in the world. The Kosi has changed its course from the easternmost part of Bihar to the westernmost part of Bihar, from the east of Araria district to the westernmost part of the Saharsa district. This kind of periodic changes in the course of the river led the Britishers to call the Kosi the curse of Bihar. Post-independence, India sought to permanently put an end to this problem, and a barrage was built at Birpur across the Kosi on its then route. The river was jacketed all the way to Kursela, where it meets the Ganga. Over the last 50 years, this jacketing suffered minor breaches due to the ravaging river in the monsoons. But on 18th August 2008, the jacketing suffered a breach at Kusaha in Nepal that eventually spread into a mass of water approximately 2 kilometers wide. जिस दिन ये इस बांध जो फूला था तब थे हम सर। तो आपके यहाँ पानी आया था? हाँ सर गए। हैं? गए। कितना पानी गया? गया था ऐसे जब कोई ठाम में जाना। कितना टाइम में पानी आया था? 12:30 बजे ने इस तटबंधन टूटा, 4 बजे तक 3:30 बजे तक हम लोग का घर तक पहुँच गया पानी।
घर में क्या था? बहुत चीज़ था सर। घर यह है तो घर का कोई सीमित है कि यही सामान है। हम मोटरसाइकिल लेकर के यहाँ से भागे, पहले बाल बच्चा को लेकर के वहाँ अपने घर से बाहर चले गए दूर। कहाँ? ये तो पानी तो आगे अररिया तक नहीं जाता नहीं, है। हम चले गए उधर प्रकाशपुर तरफ। प्रकाशपुर में। हमने ऊपर चढ़ गए, पानी नीचे भागेगा, हम ऊपर चढ़ गए। कितना लोग का क्षति हो गया गांव में तुम्हारे? क्षति तो बहुत हुआ है सर। धान चावल जगह जमीन जो है सब माटी से पूरा गया है, मैंने माटी ने धान को झाँप दिया है। अभी कुछ नहीं है उसमें, खड़खड़ बालू है सिर्फ उसमें। कितना लंबा टूटा हुआ है? कितना लंबा है? 2.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर तक होगा कितना सर। सर? 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा, 3 से नीचे। जिस रोज टूटा था उस रोज तो 1 किलोमीटर मात्र टूटने वाला था। आज टूटने का बाद में फिर कटानी लगने लगा, कटानी लगने लगा और उधर जाने लगा और इधर आने लगा। तो ये अभी यही धारा हो गई है? हाँ, मेन धार जो हो गया है सर। इधर गाँव, बहुत गाँव था, गाँव को भगा करके लेके चले गया है। जैसे अब यहाँ पर तटबंधन कर रहा है, इसलिए जाली दिया है, उसी तरह से अभी रोकथाम मात्र किया है यहाँ पर। तो मतलब आगे कटे नहीं? आगे कटे नहीं, आगे कट रहा है, उसको भी तो रोकथाम कर रहा है। और भले इसको पूरा काम करने के लिए अभी सुचारू नहीं किया है। तो ये फिर से बंदेगा तो पानी इस तरफ आ जाएगा क्या अंदर? एकदम बिल्कुल आ जाएगा सर। तो सर इसको प्रबंध तो सरकार को करना पड़ेगा। इधर का बालू अगर साफ कर करके उधर साइड लगा देगा, नाला अगर डोजर लगवा करके खोल देगा, ये पानी फिर भी इधर पलट सकता है सर। तो इस तटबंदी को वापस बांधने के बाद फिर से टकराएगा नहीं? इस जो टकराएगा सर, इससे आगे ही मैंने दूसरा कोसी खून रहा है इसी तरह, और उसमें खूनते खूनते किया है, उसमें पानी डालेगा, इधर पानी घटेगा, उस हिसाब से इसमें काम करेगा। Did not cause much devastation in Nepal, where the people managed to move to safer ground. Also, there the river did not spread as much. However, as it entered Bihar, 50 kilometers downstream, it spread itself wide and devastated a large area, consuming approximately 3 lakh acres of land in its path, and displacing approximately 30 lakh people. सब आएगा हाँ सब आएगा, देख कर। तो यहाँ से देखा जाएगा कहाँ जाने का। हमारे आदमी भी वहाँ हिल गया कि कहाँ गए नहीं। 26 के रात में शायद मुख्यमंत्री जी ने अपील किया लोगों से, जितने भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं जो अपने अपने घर में हैं वो सभी ऊंचे स्थान पर चले जाएं, क्योंकि अक्टूबर तक जो है पानी का कोई ठिकाना नहीं है। यह अपील जब लोगों ने सुना तो जो लोग नहर पर भी रुके हुए थे, यानी ऊंचे स्थान पर रुके हुए थे, उन लोगों ने भी जो है उस क्षेत्र को छोड़ के बाहर का रास्ता जो है अपना लिया। तो बाहर जाने का यहाँ तक का कटिंग था और यहाँ इतना पानी तेज़ बहाव था। मैं भी वहाँ गया पार होने के लिए, तो मैं क्या देखा, 4 आदमी, मोहम्मदीन का परिवार था, मंजूर खां उसका नाम है, बिशनपुर उसका घर है, मंजूर खां। वो अपने पत्नी और 2 पोते के साथ पानी को पार कर रहा था। उसका पोते का पैर, उसका पोता उम्र लगभग 14 की उम्र में होगा, उसके पोते को जो है पानी थोड़ा इससे ज़्यादा हो गया, थोड़ा हाथ से उसका दादा जो है उठाया, इसके क्रम में वो लड़का हाथ से छूट गया, पानी उसको ले गया। उसके बचाने में है दादा दादी और 2 भाई, दोनों चला गया। जब मैंने अपनी आँखों से देखा ये 4 आदमी एकदम तुरंत चला गया, तो मेरा साहस जो था, जबकि मैं बाढ़ के एरिया का, पानी के एरिया का तैरने के लिए आता है, ये तैर सकते थे, तो मेरा साहस देख के जो है समाप्त हो गया। The people had lost everything and some narrowly escaped death. With the sea of humanity struggling for survival, there were certain imperatives that the government of Bihar had to face and act upon quickly to give the affected immediate solace. The state responded quickly.
बाहर का एक आदमी नहीं करेगा। कमेटी बनाइए, सब हर टेंट से 2 जैसे ऐसे जवान आदमी है ना, उसको लीजिए और उसको बोलिए कि अपना गिनाओ कितना आदमी है और उतना आदमी का खाना उसको दीजिए जाके बांटे। किस तरह का बीमारी आ रहा है ये बताइए। बीमारी में पेन एब्डोमेन है, लूज मोशन है, डायरिया है, कोल्ड कफ है। डायरिया का एपिडेमिक फैलने का एपिडेमिक का चांस सर नहीं है। अभी नहीं है। दवाई आपको सब है? जी सर, पर्याप्त। मतलब दवाई में आपको कोई कमी नहीं? कमी नहीं। The breach in Kusahar took place about 10 days, 12 days ago. Now, as far as disaster management is concerned, a large number of population has been marooned in these areas. So now our top priority is to rescue these people from those areas. हम आपको कार्टून देगा। अब आप पानी लो। चलो चलो मूल लेकर आगे जाके नरपतगंज सब आएगा नरपत। हाँ सब आएगा। The most important aspect of such kind of disaster is the immediacy of giving food security to the affected. Millions who were stranded in the early days of flooding were given food packets airdropped from helicopters. Meanwhile, there was a simultaneous mobilization of food grains to feed the lakhs of flood victims pouring into the relief camps. The daily requirement of food grains was colossal. कितना चावल है? रात में जाते हैं सर 4 कुंटल और अभी खिचड़ी में जाते हैं 2 कुंटल। दिन में कितना खिचड़ी बनाते हैं? 2 कुंटल चावल। 2 कुंटल चावल। 2 क्विंटल चावल का मतलब अभी यहाँ पर कितना आदमी है? 2 क्विंटल चावल में कितना आदमी होगा? यहाँ 25,000 रुपये है। 2500 का। 4 क्विंटल फिर चावल बनाते हैं। हाथ में अधिक लगता है या कम लगता है? हाथ में अधिक लगता है। 4 दाल में? दाल यानी कुंटल में 25 किलो। 25 किलो। दाल भात में भी एक व्यक्ति पर औसत कितना रखते हैं चावल? इतना 200 ग्राम 250 ग्राम। The infrastructure created for the public distribution system during normal times becomes a crucial link in the delivery mechanism for ensuring food security to the people affected by disaster. This was amply demonstrated by the extensive use of the storage facilities of the Food Corporation of India as well as those of State Food Corporation in the affected areas and in the contiguous districts. Most of the food grains stocked in these godowns had been procured from the farmers locally through the usual procurement effort of the state. The mobilization of food grains was possible only through the existing public distribution system routes. Here, one interesting coincidence needs to be mentioned. In the year 2008, the government of Bihar procured record number of food grains ever. By May, most of the food stocks were lifted and the State Food Corporation godowns were stocked fully. It is important to understand how the public distribution system or the PDS functions in normal times.
Rakes arrive with food grains to be loaded at the Food Corporation of India or FCI godowns in various parts of the state.